Hello, my dear students, and I hope all are good at home. After a long time, we are facing each other, so I think all are good and they are doing very well at home. So ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଘରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ ଆଉ ପାଠକୁ ମନ ଦେଇକି ପଢୁଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢୁନ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ବି ପଢୁଥାଉ କାରଣ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟାଏ ବିକଳ୍ପ ଅନଲାଇନ୍ ଏଜୁକେशन and you have to learn by online, nothing else is there. So you have to accept it and you have to perform well. So आमे कौन पढ़ुथिले मैग्नेटिज्म पढ़ुथिले तो मैग्नेटिज्म रो आमे कौन सब पढ़िथिले आमे अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़िथिले एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़िथिले। तो आज आमे कौन करिबा नेक्स्ट हमर अछि किछि टर्म्स उडा अछि टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म आमे किछि पढ़िबा तापर आमे नेक्स्ट स्टार्ट करिबा डाइपैराफेरो जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट तमरो एग्जाम पई ए वर्ष तमरो एग्जामिनेशन मध्ये 3 मार्क्स रो क्वेश्चन पचाइथिला तो कंपलसरी गोटे क्वेश्चन आसे डाइपैराफेरो ता भीतर डिफरेंस कोन अछि आमे मध्ये पढिबा। आ मध्ये गोटे कथा हमर सिलेबस मध्ये चेंजेस हो जाइछि रिवाइज सिलेबस हो जाइछि तो ताकू नै कि आमे गोटे डिस्कशन करिबा गोटे लाइव क्लास नै जिवि सेथरे विल डिस्कस अबाउट द रिवाइज syllabus. So let's start today's lecture, that is magnetism. So before that I am saying some terms connected to magnetism. We'll learn that terms. The very first term is magnetizing field. So just write is magnetizing field. So what is that magnetizing field? मन रखि थाओ एडा तो बहुत कंफ्यूज कला भया टर्म आसीबो तमारे जदि भल से बुझुचो देखुचो ताल टर्म छुडा को मन रखि परिबाउ जानि परिबो कान आगु या पर जो डाइपैराफेरो आसीबो सेतरे टर्म गुडा को डायरेक्ट यूज करा जिवो तो सेति पय हमने जानि आ बेले बेले यार यूनिट डायमेंशन मध्ये बेले शॉर्ट क्वेश्चन रे पचाइबे। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड माने कोन जो फील्डटा इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सपोज गोटे मैग्नेटिक मटेरियल अछि लेट अस कंसीडर इट इज ए आयरन रॉड। सो आमे ताकू गोटे मैग्नेटिक फील्ड रखिले माने मैग्नेट भीतर रखिले एपर गोटे नॉर्थ पोल एपर साउथ पोल अछि तो जो फील्ड आसला ये जो फील्ड आसला जो फील्डटा आयरन बा मैग्नेटिक मटेरियल रे कोन करबो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करबो काइन आयरन को किछि समय रखला पर मैग्नेटिक फील्ड रे कोन होबो ए आयरनटा निजे कोन हे जो मैग्नेट भलिया बिहेव करबो किछि समय रखला पर तो ताकू कह जाय मैग्नेटिक इंडक्शन हम पढिथिले। तो एठी जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हैला कहा द्वारा हला ए जो फील्ड द्वारा हला तो ए जो फील्ड को कोन कहा गला मैग्नेटाइजिंग फील्ड। The magnetic field, just write it, the magnetic field, everyone should write it, the magnetic field which induces magnetism in the magnetic material is called as magnetizing field. समझते लिखेंगे एटा को मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड माने जो फील्ड है द फील्ड व्हिच जो मैग्नेटिक फील्ड आसला से जो फील्ड है यादर कोन करिवो इंड्यूस करिवो मैग्नेट जे कोनोसी मैग्नेटिक फील्ड हो जोटा की कोन करे इंड्यूस करे कोन magnetic field. The magnetic field that induces magnetization or which induces magnetization or magnetism, you can say that field is known as magnetizing field. आपको normally B द्वारा indicate करा जाए मन रखि थाओ normally हमें जेतेबे भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक रे कन्वर्ट करिया चाहछो मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट रे कन्वर्ट करिया चाहछो you need a solenoid. What you need a solenoid. So जदि गोटे जगह करंट फ्लो हो तुम जानछो जदि करंट फ्लो होला ता द्वारा कोन होय मैग्नेटिक फील्ड मध्ये इंड्यूस होय। तो नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड को हमर लिखा जाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड को लिखा जाय B = mu naught n into I। जदि करंट फ्लो हो गोटे लूप रे then the magnetic field, it is the magnetic field of a solenoid. So normally solenoid is similar to a bar magnet also. So normally we consider the magnetic field magnetizing field equals to mu naught n. I don't need to write this one, just write that definition only. Next one is
magnetic induction. Next one is magnetic induction. Let's write it, magnetic induction. So what is that? Magnetic induction. So magnetic induction means, so if I keeping, I'm saying this is an iron material, so this iron we are keeping inside a magnetic field. So this is the magnetic field and this is the iron material. So what will happen? The net magnetic field equals to the sum of the external magnetic field, बाहर जति magnetic field आसे सेटा प्लस ये भी मैग्नेटाइज्ड हो, मैग्नेटिक आयरन टा भी कोन हला मैग्नेट भले बिहेव करे किछ समय कहली, तो या द्वारा भी एटा जेतु गोटे मैग्नेट हला एथि भी किछ मैग्नेट आसीबो, मैग्नेटिक फील्ड आसीबो. तो आयरन रो मैग्नेटिक फील्ड प्लस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो दीटा को सम कले जो फील्ड आसे दैट इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन. दैट इज नोन एज मैग्नेटिक induction. समझते ध्यान से सुनो. Magnetic induction is the sum of external magnetizing field or external magnetic field, you can say external magnetic field plus the additional field developed due to magnetization of the material. Material टा magnet भलिया हबा द्वारा, material टा magnet भलिया हेबा द्वारा जो magnetic field आसला that field plus external magnetic field is known as magnetic field induction. So listen properly so that you can write it. Just write in magnetic induction. So magnetic induction is the, just write in magnetic induction is the sum of external magnetizing field बाहर केते एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देथिलो प्लस आयरन टा मैग्नेट भले हला ता द्वारा केते मैग्नेटिक फील्ड आसला, तो दीटा को फील्ड को ऐड करबा. सम इज द सम ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द additional field developed due to magnetization of the material. Magnetization of the material. मन रखि था एटा तो हमें पिला माने डायरेक्ट हमें लिखिबा, नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट पढिबा. व्हाट इज आई एम डायरेक्टली कहबी व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन इज दिस मच, magnetizing field is this much. So you should know that what that means. So magnetic induction means मैग्नेटिक इंडक्शन को रिप्रेजेंट करा जाए B द्वारा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को B नॉट द्वारा रिप्रेजेंट करा जाए. सो B इक्वल्स टू B नॉट प्लस BM. दीटा फील्ड असला गोटे नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू दिस इज मैग्नेटिक इंडक्शन. मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वल्स टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल. मटेरियल टा मैग्नेटाइज हला ता सेम किछि निजर फील्ड डेवलप करिवो आउ बाहर फील्ड दीटा को मिसै दियो जोटा हला मैग्नेटिक इंडक्शन. सो B equals to BO plus BM. This is what you can write here in downside also, or you can just write here external B naught and the additional magnetic field due to the magnetization. This is BM. So in bracket also you can write. Next one is magnetizing field intensity. Just write it, pause the screen and write it. Next one is magnetizing field intensity. एबे जो टर्म रासे सब कंफ्यूज कला वाला टर्म, सो किंतु सब टर्म रो माने अलग अलग. सो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी याको रिप्रेजेंट करा जाए H द्वारा. सो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी अप्रोपोर्शनल मैग्नेटाइजिंग फील्ड माने जो एक्सटर्नल फील्ड आथला एटा हला एक्सटर्नल फील्ड ता भितर आयरन का अछि. दिस इज आयरन आई. सो ए फील्ड टा को कहला मैग्नेटाइजिंग फील्ड. तो फील्ड रे केते परिमाण अछि, द अमाउंट ऑफ द फील्ड प्रेजेंट देयर, दैट इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी. इंटेंसिटी माने जानछो समझते लाइट रो इंटेंसिटी जेंतु कहले छोट लाइट बड़ लाइट
गोटे पर्टिकुलर केते अमाउंट रे से लाइट दोची दैट इज इंटेंसिटी सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहला माने मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कहला माने बाहर जो फील्ड अछि जोटा मैग्नेटाइज करछि मटेरियल को तारो इंटेंसिटी केते अछि और यू कैन से राइट हियर द डेफिनेशन द ability of magnetizing field to magnetize a material गोटे मटेरियल को मैग्नेटाइज करिया पई केते फील्ड द अमाउंट केते अमाउंट रो फील्ड देलो जो फील्ड अछि रहला एक्सटर्नल फील्ड तो ये जो फील्ड अछि से फील्ड रो केते परिमाण अछि द अमाउंट ऑफ द फील्ड प्रेजेंट सो यू कैन से द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड रहला तार केते एबिलिटी अछि टू मैग्नेटाइज ए मटेरियल आपको मध्य आउट वे डिफाइन करा जाए एम्पियर नंबर ऑफ एम्पियर लूप प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ ऑफ ए सोलेनॉइड आपको दीटा वे डिफाइन करा जाए एटा गला आउट मध्य आपको यार फार्मूला एक्चुअली होची H = n * I नंबर ऑफ एम्पियर लूप को लिखा जाए ni यदि n नंबर ऑफ टर्न अछि आ प्रत्येक टर्न यदि करंट I फ्लो होची तो एम्पियर लूप को लिखा जाए ni डिवाइडेड बाय l याको हमें 1 नबा l को हमें 1 नबा ताहले हमर फार्मूला जो n * I and which mathematical definition this is the mathematical definition this is the meaning of the magnetizing field density तो mathematical expression को है जो मैं लिखिया जंच में लिखि परिबो नंबर ऑफ टर्न्स नंबर ऑफ एम्पियर टर्न जोटा लिखा जाए ni नंबर ऑफ एम्पियर टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ ए सोलेनॉइड गोटे सोलेनॉइड रे प्रत्येक यूनिट रे केते लेंथ रो सॉरी पर यूनिट लेंथ रे केतेटा टर्न अछि से अनुसार कोन हबो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आसीबो से अनुसार केनी आई मध्य लिखा जाय तो हम यदि लिखिबा b रो फार्मूला हम जानछो b = व्हाट इज द फार्मूला mu naught n * I b naught रो फार्मूला स्टार्टिंग लिखतली b = मैग्नेटाइजिंग फील्ड रो फार्मूला ला mu naught n I तो ni जदि h को रिप्लेस करबो ताले एटा हेजबो mu naught into h ए फार्मूला दी दरकार बे मन रखिथाओ this is the b naught equals to mu naught into h this is the relation between what magnetizing field and magnetizing field intensity this is intensity this is the magnetizing field so confusion jamaru next one is intensity of magnetization next is intensity of magnetization आपको लिखा जाए m मध्य लिखा जाए गोटे गोटे बहिरे I भी मध्य लिखा हेतिबो तम ऐसा डेफिनेशन इंटेंसिटी आर मन रखता आर यूनिट आर मन रखता यूनिट आर शॉर्ट क्वेश्चन पचारे एटा कोन आर यूनिट हैला एम्पियर पर मीटर एम्पियर लूप अछि केते करंट केते फ्लो होची तो कह एम्पियर लूप पर यूनिट व्हाट लेंथ यूनिट हैला मीटर सो m इनवर्स और a डिवाइडेड बाय एम्पियर पर मीटर तो खाली ए डेफिनेशन मन कर डेफिनेशन के पचारेनी जदी पचारियो यूनिट नले आ रिलेटेड क्वेश्चन ए टर्म गुडा का हम नेक्स्ट दरकार हम डायरेक्टली कहबी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी तो तमारे बुझिया दरकार ता माने हला एटा नेक्स्ट वन इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ताको डेफिनेशन so write down its definition intensity of magnetization is defined as magnetic dipole developed per unit volume of the material I am defining this by mathematical so m equals to intensity of magnetization m equals to m by v magnetic dipole moment per unit volume of the material v is the volume so यार माने कोन एक्चुअली मीनिंग ता अलगा
एटा होची मैथमेटिकल डेफिनेशन मीनिंग हैला कोन ए जो मटेरियल को रखिथिलो आयरन को कोट रखिथिलो मैग्नेटिक फील्ड रखिथिलो तो जो आयरन भितरे केते मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हैला मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड इनसाइड द material that is known as intensity of magnetization or simply magnetization intensity of magnetization or आको मध्य simply खाली magnetization कहले भी ठीक अछि intensity माने केते amount रो field develop हैला where inside the material भितरे केते magnetic field आसिला ए material भितरे that is known as intensity of magnetization or simply magnetization ताकू जदि हम लिखिबा मैथमेटिकली डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम तार पर यूनिट वॉल्यूम रे जो मटेरियल अछि द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट मटेरियल ए मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम रे केते डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल डेवलप हेची दैट इज आल्सो नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो आपको दीटा बारे डिफाइन करा जाए योर विश यू कैन डिफाइन सो आमे देख लिखिबा डाइपोल मोमेंट रो फार्मूला जानछो समस्ते डाइपोल मोमेंट रो फार्मूला समस्ते जानछो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट q into qm into 2l जदि तारो लेंथ 2l अछि ताहला हमर हला q into 2l डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वॉल्यूम रो फार्मूला हला एरिया into लेंथ का हमें 2l लेजे तो दीटा कटि गले फाइनल फार्मूला आसीबो qm by a so एको मध्ये आउट वे डिफाइन करे जे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज आल्सो डिफाइंड एज पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया यू कैन से आल्सो दीटा को फार्मूला रो जो फार्मूला टे लिखले भी चलबो m by b और qm by केते आसीबो a आसीबो दीटा को फार्मूला ठीक अछि जोटा भी लेखो तापर नेक्स्ट अछि हमर आउट अछि मन रखाओ एटा मु इरेज कर नोची नेक्स्ट आउट अछि देखो आकु मध्ये आउट वे लिखा जाय परिबो ए भला फार्मूला मध्ये लिखा जाय परिबो एठी जदि हमें b इक्वल्स लिखिबा bm इक्वल्स हमें लिखि परिबो मध्ये bm इक्वल्स मध्ये लिखि परिबो mu नॉट n into im समान जिंस एम्पियर लूप जदि अछि पर यूनिट लेंथ रे जदि एम्पियर लूप और एम्पियर नंबर ऑफ एम्पियर टर्न जोटा कह जाय त कह एम्पियर लूप और नंबर ऑफ एम्पियर लूप और नंबर ऑफ एम्पियर टर्न मध्ये कह जाय सो n into im होबो सो im जगह रे ए दी जगह रे केते लिख परिबो m भी लिख परिबो सो bm इक्वल्स टू मध्ये तमे लिखि परिबो mu नॉट ए दी जगह रे कोन लिख परिबो m लिख परिबो सिमिलर लाइक दिस ए भला मध्ये लिख परिबो एटा s तिला h टाइम ला कोन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी माने बाहर रो फील्ड रो केते वैल्यू एटा ला भीतर फील्ड जो मटेरियल अछि से मटेरियल भीतर केते फील्ड हैला दैट इज h इज रिप्लेस्ड बाय m सो जस्ट रिप्लेस्ड h बाय m सो n im होबो सो n im एठी जगह रे कोन लिख परिबो खाली m लिख परिबो आ एठी b नॉट जगह रे bm स्टार्टिंग रे कहतली मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ने जे एक्सटर्नल फील्ड एडा हला मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बाहर फील्ड प्लस भीतर फील्ड समेशन रे मध्य बाहर करबे तार ओटे रिलेशन बाहर लास्ट को एडा वाला इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नेक्स्ट वन है देखो समझते मैग्नेटिक परमेबिलिटी नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी बेडा पचराइतले वर्ष पिलाने शॉर्ट क्वेश्चन आस्तिला राइट ऑन द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी समझते देखो मैग्नेटिक परमेबिलिटी तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी आपको म्यू द्वारा लिखा जाए तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी माने कोन जो मटेरियल टा रहिला सो मटेरियल देई की केते परिमाण रे ता फिजिकल मीनिंग ता देखो दीटा जे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मोठी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी बट व्हाट इज दैट मीन्स सपोज दिस इज आयरन रॉड आ ताको ने कि मैग्नेटिक फील्ड रखुचो तो ई आयरन भीतर दे की केतोटा मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करिवो बा पेनिट्रेट करि परिवो दैट इज नोन एज मैग्नेटिक परमेबिलिटी इट इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल इट इज फिक्स्ड तो से अनुसार सेटिकटा कोन दे परिवो मैग्नेटिक
field or magnetic field lines taku cross kari paribo. That is the number of kono magnetic field that can penetrate through a material is known as magnetic permeability. किंतु ताको जदि आमे मैथमेटिकली देखिबा मैथमेटिकली तार डेफिनेशन अलग आसीबो b equals to what b by h. Remember mu equals to b by h, magnetic induction divided by what is h. H is magnetizing field intensity. H is magnetizing field intensity. So the ratio of magnetic induction to the magnetizing field intensity. So just write it its definition by mathematical formula, or you can say the quantitative definition. Qualitative definition you can write the connect paribo. Magnetic permeability is defined as the number of magnetic field that can penetrate to the material, or ताकू mathematical मध्ये बड़ा लिखा जाए तो हमें mathematical definition टा लिखिबा. लिखो magnetic permeability is defined as the ratio of magnetic induction to the magnetizing field intensity. Is defined as the ratio of magnetic induction to the magnetizing field intensity. This is the, and you can find the unit of this one by putting the unit of B and by putting the unit of H and dimension also. Also हम ऑलरेडी बाहर करचे कोठी स्टार्टिंग रो बाहर कर देथिले बायोसोर्स लॉ पढिया पूर्व मध्ये हम सेठी बाहर करथिले एठी मध्ये कोन थरे बाहर कर परिबो हम मते शेयर करबो. नेक्स्ट वन इज magnetic susceptibility, sorry magnetic permeability. Next one is relative permeability. Or you can write mu r, relative permeability. तो तमे माने पढिथिबो ससेप्टिबिलिटी जो हम सॉरी पूर्व पढिथिबो परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी पढिथिबो. एटी सेमती रिलेटिव परमिबिलिटी. तो रिलेटिव परमिबिलिटी mu r equals to mu divided by mu naught, or you can say mu m also, or simply mu, जहां भी लिखो समान जिंस. Permeability of a medium to the permeability of free space, दीटा को रेशियो को हमर कोन कह जाय रिलेटिव परमेबिलिटी. ऑलरेडी हम जानि छे तो एटा लिखि दो. रिलेटिव परमेबिलिटी is defined as the ratio of permeability of a medium or material जहां भी को to the permeability of free space, permeability of a medium to the permeability of free space is known as relative permeability or mu r. अब यार यूनिट डायमेंशन 0 रहइबो. एटा आला यूनिट यार सेटा तो दिटा कैंसिल हे जिवो, तो सेथि पई यूनिट लेस क्वांटिटी. So you can write it is defined as the ratio of permeability of a medium to the permeability of free space. Next one I would reading your magnetic susceptibility. So magnetic susceptibility आको लिखा जाए काय ए वाला सिंबल ले पड़थियो. एंदे सिंबल करिवो x करिवो, बट एडा पे एक्सटेंड करिवो तार सबु को एक्सटेंड कर दियो. त पहिले काय सिंबल स्पेलिंग हला chi. So you can say chi, its symbol is chi. So यारो माने ना बुझेबी, बट तार फार्मूला ला chi equals to m by h. रिमेंबर या माने कोन दी प्रकार करे सदा डेफिनेशन जाने चेष्टा करो. क्वालिटेटिव आउटे क्वांटिटेटिव ता माने अलगा और ता मैथमेटिकल डेफिनेशन भी अलगा. तो या माने कोन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी माने एठी जो मटेरियल रे रहला, ए जो मटेरियल ता केते परिमाण रे मैग्नेटाइज हेई परिबो, माने या दिहरे केते मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हेई परिबो, दैट is known to be what magnetic
ससेप्टिबिलिटी एटा गोटे कांस्टेंट जोटा हम देखले जानि परिबा जेमति परमिएबिलिटी परमिटिविटी गोटे कांस्टेंट तो तमे कांस्टेंट को देखले जानि परिबो जे आ देहरे केते परिमाण रे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हे परिबो डिफरेंट मटेरियल पई अलग आयरन पई अलग आसीबो निकेल कोबाल्ट समस्त पई अलग अलग कोन थाए ससेप्टिबिलिटी थाए से अनुसार तमे जानि परिबो जे केते परिमाण रे मैग्नेटिक फील्ड या देहरे डेवलप हबो हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड that can be developed inside a material that is known as magnetic susceptibility. What a constant, remember this is a constant, and by seeing this constant you can find how much magnetic field can be developed. तार mathematical definition है m by h. m है कौन समस्त टिके मन पकाओ m है कौन intensity of magnetization और h है कौन magnetizing field intensity तो दीटा को देखि दियो रेशियो सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आसे बहुत इंपोर्टेंट पिले माने शॉर्ट क्वेश्चन आसे डेफिनेशन लिखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी is defined as the ratio of magnetization, or you can say magnetizing field intensity, ratio of m, it is the intensity of magnetization, or you can say simply magnetization is defined as the ratio of intensity of magnetization to the magnetizing field intensity समस्त लिखिनियो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जहां भी को इंटेंसिटी नेक्स्ट वन एतिक थिला आ भीतर रे रिलेशन थाए मन रखिताओ से रिलेशन ता लिखिताओ रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी एटा 2 मार्क पर आसे ए वर्ष तो सिलेबस नाही बट फिर भी हमने जानि थला दरकार बेले 2 मार्क्स एटा क्वेश्चन आगु आसेला फिर भी ए वर्ष मध्ये किसी कहनी फिर भी पढ़ी था एटा तो तमे जानछो मैग्नेटिक रिलेशन बिटवीन म्यू एंड काई 2 मार्क रो क्वेश्चन परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी भीतर रिलेशन कोन हमें जानते मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इक्वल्स टू कहतली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक field additional magnetic field developed inside the material या द्वारा केते magnetic field आसना सेटा प्लस बाहर field एटा मिसले magnetic field induction कर दे तो तमाने टिके प्रूफ पढ़थिलो म्यू रो फार्मूला कोन b by h तो एटू b रो वैल्यू तमाने बाहर कर परिबो b जाय केते लिख परिबो b इक्वल्स टू हम लिख परिबो म्यू इनटू h ए फार्मूला टिक को h टिके प्रूफ सो b इक्वल्स टू b by h तो b इक्वल्स टू म्यू इनटू h तो एडिना पुट करो म्यू इनटू h इक्वल्स टू सेंती b नॉट रो फार्मूला मन बताओ म्यू नॉट इनटू h समस्त देखो खाता जान परिबो देखि तो ऑलरेडी bm रो फार्मूला सेंती म्यू नॉट इनटू m सेम लाइक दिस फार्मूला ऑल कैन बी एडा जेंति लिखिलो सब गुडा से बळे लिख परिबो एडा होते मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एडा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो एटा हमरा देखो सबठू h कॉमन है आसो किबा h को नेके पर डिवाइड कर दियो तो म्यू विल बी म्यू नॉट सबठारे h डिवाइड कर देले एठी भी h so dividing h that's right dividing h so mu naught plus this is mu naught m by h mu naught m by h सब थरे मु h डिवाइड करली सो mu naught कॉमन पय आसीबो सो mu naught into 1 plus m by h ठीक है प्रूफ देखो m by h is known as what chi so you can write here chi so mu equals to mu naught into 1 plus chi this is the relation between magnetic permeability and magnetic susceptibility important relation बहुत थरा पचारे जाइछि 2 मार्क क्वेश्चन ने काउंसिल एग्जाम में
रिलेशन बिटवीन म्यू एंड काय एटा समस्त लिखि नियो बहुत सहज रिलेशन दा h रु खाली डिवाइड करियो फॉर्मूला जानि छ h डिवाइड करले आंसर आसी